Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, so shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Technology is not just a tool, it can give learners a voice that they may not have had before. Good afternoon, everyone. With this beautiful quote by George Couros, I, Dr. Pooja Joshi, as a moderator and faculty of HSST, welcome you all on a behalf of entire Swami Rama Himalayan University. Dear attendees, I am delighted to welcome you all to this exciting and informative session stated as Fueling the Job of Tomorrow. I would like to take the opportunity to extend my greetings and warm welcome to our esteemed keynote speaker, Mr. Manish Srivastava, sir, for this session. Sir, thank you for your gracious presence. Thank you for this consideration. It's an honor to have you. Thank you, Dr. Pooja. I really appreciate, and I'm really excited to be part of this session. Yeah. Let's take a quick glimpse on his achievement. Mr. Srivastava has a diverse background as an entrepreneur, angel investor, board members of multiple corporates and startups. He is co-founder of Pravartan Tech, also a chartered member of TIE. His current focus is on digital transformation and implementing innovative changes not only at HRU, but his association with the other organizations also. With over 25 years of professional experience, including 17 years in leadership role for large corporates and 8 years running his own venture, he brings a unique perspective. He has worked extensively across Europe, Australia, Asia, and has made substantial contribution in the area of business strategies, product and technology, and leadership. Sir is an IIT alumnus and has completed a leadership program from Harvard Business School and an MDP from IIM Ahmedabad, which have equipped him with the skills and knowledge to be a significant influencer in his field. I welcome you, sir. Before sir will address the students, I would like to make few points that in this webinar, we will explore the latest trends and insights into the skills and knowledge that will be required for successful career in the next decades. So students can also raise their queries by dropping out messages on message box either, or they can directly ask the question, but that session will happen once the sir completed his address. So without any further delay, let's get started and explore the fascinating world of AI, ML, and cybersecurity from Sir's perspective. Sir, please. Okay, so thank you very much, Dr. Pooja. Am I audible to everyone? Yes. Okay, great. So let me share. It's an honor to present here, and let me share my screen before we move forward. And I hope this is visible to everyone, right? Is it visible? Yes, sir, it is visible. Please proceed. Correct. So now we are talking about today AI, data science, and cybersecurity. How it is termed as futuristic skill because it has great future. So let's look deep what's inside. What do we mean by AI, data science, cybersecurity? Are these buzzwords, and how it's going to impact us overall, and what kind of scope they bring to us in terms of job market, employability, and the future skills per se. And it involves a lot of new research, innovation, etc. So I'll be talking about these things in detail. But if we start with the basic concepts of AI, data science, and cybersecurity, so I'll start from this point. Like today, I'm going to cover three things. One is data science, how
what does it mean, and how does it work, and what does it take to become a data scientist. Second is I will be touching upon AI, which is acronym of artificial intelligence, and we will look at we will explore the magic of artificial intelligence rather. And similarly, when it comes to security, because now world is becoming digital, you can see everywhere. We are in digital era, not just digital era, but we are in a way it's part of our life. So if digital world is part of our life, then that brings threat on a security as well in digital domain. So how to deal with that? So that is third area, which is safeguarding the digital world with cybersecurity. Okay, let's look at the second level, next level. Okay. So first of all, before we deep dive on AI, any view from any audience? I don't want this to be a monologue, rather I would expect that if you also participate, then it would be a meaningful session. So have you ever wondered, before we talk about AI, what is intelligence? We are talking about artificial intelligence here, but what is intelligence? So I think if you look at human being, then intelligence is related with human being, right? So for example, the ability to learn, think, and then behave accordingly. So these are the three fundamental things which all of us follow, right? When I say ability to learn, then it means we learn right from our birth. We learn new things. At the early stages of our life, we learn objects around us like tree, boy, birds, etc., etc. Then as we mature, we learn complex concepts. As we mature further, we go to the school, colleges, we learn even further complex things. And that's how we move forward, right? So you can say that learning gives us an opportunity to create some sort of intelligence, and that lead us to think. I will just demonstrate this. What do I mean by think and learning correlation? And then as we think, we apply those thinking or that thinking in our behavior, that reflects in our behavior. So that is the role of an intelligence. So if I ask you guys and everybody a question, there is a question of who am I? So if I show you this picture, what is coming into your mind? Anybody from the audience? Is this a bird? Right? So if this is a bird, how do you know that this is a bird? Right? That means you must have learned it in your childhood, that somebody must have shown to you that this is a bird. And by bird, you recognize the bird by its wings, by its tail, by its beak, by its legs, etc., etc. So you can say there are different parameters or features, so to say, which suggest that this is a bird. Yeah, somebody has written parrot, correct. So this is a parrot and a bird, right? But what if I change the same thing to a next figure? Now what it is? Can anybody tell? This is also a bird, right? Somebody has written in the chat. Dove, correct. So dove is also a bird, right? So now imagine we have, nobody has told us that you can't decide whether it's, you are saying dove, why? Because you can't see a picture like this the way we had seen the parrot picture. It had certain clarity in terms of color, in terms of shape, in terms of features. But in this picture, you can't see anything, right? Still, you are saying that it's a dove. Why? Because there are certain parameters and features which are ingrained in our mind. And that has been possible because of the learning we had in the past.
right? So this is a common intelligence I talked about. I mean, Dr. Pooja, I can continue in this fashion, or you want me to talk both with the audience and my talk parallelly? The student can also participate. It's a two-way. Correct. Could be a two-way also. Correct. So that is what I was preferring to. But anyway, so I will continue. So if you look at it, अभी इस पूरे concept में क्या हुआ? दो चीजें common हमारे सामने निकल के आए. First thing was that when I showed you the picture of parrot, you recognize parrot. When I showed you the picture of this dove, then you saw the picture of dove, and then you recognized. So similarly, that was the intelligence. Now, similarly, if I tell you that, can I use a computer to do the same thing what we did just now? Can I feed this picture to a computer, and computer should tell me that this is a parrot or this is a dove? If we need machine to do this, then what we are doing, we are bringing intelligence, what we saw in us today, into that machine. But that intelligence is not a common human intelligence, the way we have our intelligence. That intelligence has been built inside the machine. If any intelligence is built inside the machine to act, then it's called artificial intelligence, because that's artificially created, right? So now I hope you understand what is artificial intelligence and how it is linked with the human intelligence and why it is called artificial intelligence, right? So if I write a computer program where I feed, now if AI is clear to you at this point of time, I will take a pause and feel free to ask any question if you have. No? Okay. So let's move on. So this is the artificial intelligence in nutshell. Now, in order to achieve this, what we need to do? Now imagine, आपने कैसे बताया कि ये डव है या ये पैरट है? आपका माइंड को ट्रेन किया गया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. जब व्हेन यू वर किड, माइंड को कैसे ट्रेन किया गया? आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके जब आप छोटे थे तो आसपास के सब लोगों ने बताया कि ये पैरट है, ये चिड़िया है, ये आई मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बर्ड्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड टू यू. सो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? At that point of time, your mind was learning. And how it was learning? It was learning with the data. And data क्या था? वो images थी. चाहे वो parrot की image हो, चाहे इस bird की image हो. तो उस image के साथ जब आपने, आपके mind ने इन चीजों को learn किया, तो उस learn करने का से आपके दिमाग में ये एक ability create हो गई, which is called intelligence, जो अब आपको कोई भी नई picture दिखाई जाए, I'm sure you might not have seen maybe this parrot, you might have seen some other parrot, you might not have seen this kind of dove, you might have seen some other dove, but आपने differentiate करके mind ने बता दिया कि ये dove है और वो parrot है, right? Similarly, अगर हम अब इसी को मैं translate करता हूँ कंप्यूटर के लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर या किसी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, तो अगर मैं किसी सिस्टम को ट्रेन करूं, मैं सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करूं जहां पर मैं अलग अलग इमेजेस को फीड कर रहा हूं, जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता था, तो मेरे माइंड का जो सिस्टम है उसको अलग अलग पिक्चर से फीड करके बताया जा रहा है कि ये पैरट है, ये डव है. सिमिलरली मैंने इस इमेजिन कंप्यूटर का एक ब्रेन बनाया है या प्रोग्राम बनाया है या सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें मैं अलग अलग पिक्चर फीड कर रहा हूं. तो क्या कर रहा हूं मैं? ट्रेन कर रहा हूं मैं अपने सिस्टम को. अब हमें बनाना क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिस्टम बनाना है. तो अब हमको सबको पता लग गया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट?
So artificial intelligence is ability for a machine to learn, think and behave like a human. So learn, think and behave. तो सबसे पहले इसको लर्न करना पड़ेगा. तो सपोज हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बनाया, उसमें मैंने तरह तरह की ये इमेजेस फीड करी टू ट्रेन इट, जैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं बचपन में. तो लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई. अब मेरा सिस्टम रेडी हो गया है. सो अब आप बड़े हो गए हो, तो आपकी लर्निंग प्रोसेस जो चिड़िया को पहचानने की थी वो मोर और लेस कंप्लीट हो गई है. अब आपको ये नई पिक्चर आज मैंने दिखाई तो आपने बता दिया कि ये डव है. कैसे बता दिया? बिकॉज आपके माइंड ने पुरानी जो ट्रेनिंग डेटा के सेट ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे जो फीचर बनाए थे दिमाग में, उसके बेसिस पे आपने बता दिया कि ये डव है. सेम थिंग विल हैपन इन कंप्यूटर वर्ल्ड की कंप्यूटर में जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसको जब मैंने ट्रेन कर लिया, तो ट्रेन करने के बाद जब मैं उसको नई पिक्चर दिखाऊंगा तो वो बता देगा कि ये डव है, बिकॉज वो भी सेम प्रोसेसिंग करेगा. तो कमिंग बैक, ये जो सिस्टम हमने बनाया, जहां हमने सिस्टम को पहले ट्रेन किया कि वो करेक्ट चीजें आइडेंटिफाई कर पाए द वे वी थिंक, इज कॉल्ड डिजाइनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस और द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ एआई. सेकेंड पार्ट आता है उसका थिंकिंग पार्ट, विच थिंकिंग ह्यूमन के टर्म्स में है. मशीन के टर्म में थिंकिंग क्या है कि उसको हमने कोई इनपुट दिया. जैसे हमारे केस में क्या है, ह्यूमन के केस में आपको मैंने ये इनपुट दिया. इनपुट इज नथिंग बट दिस इमेज. मेरी आईज ने उस इमेज को देखा, मेरे ब्रेन को सिग्नल भेजा कि ये एक पिक्चर आई है. ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया अपने इंटेलिजेंस सिस्टम से और बताया कि ये डव है, और गले को कमांड दिया टू स्पेल आउट अ बर्ड. राइट? सेम चीज अगर मुझे कंप्यूटर में बनानी हो तो कंप्यूटर के कैमरा को मैं यूज करूंगा आई की तरह. उस कैमरे ने ये पिक्चर पिक करी, सिग्नल गया ब्रेन पे. कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? वो मेरा एआई प्रोग्राम है. एआई प्रोग्राम पहले से ट्रेंड है क्योंकि मैंने उसको ट्रेन कर रखा है. उसने फीचर देख के बताया ये डव है, और उस डव को जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस ने गले को दिया ऑर्डर टू स्पीक आउट बर्ड, उसने स्पीकर को इंस्ट्रक्शन दिए टू स्पेल आउट बर्ड, या फिर स्क्रीन पे उसने टेक्स्ट दिखा दिया बर्ड. राइट? तो ये आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बन गया. अब इस सिस्टम को बनाने के लिए अब यहां तक हम क्लियर है. अब लेट्स लुक एट कि एआई को एवरीडे लाइफ में हम कैसे कहां यूज करते हैं. आपने देखा होगा, आई एम श्योर सबने देखा होगा. आई डोंट नो ये लाइंस कहां से आ रही हैं. कैन वी रिमूव दीज लाइंस? ये एनोटेशन की लाइन है, राइट? सॉरी, प्रॉब्ली बाय मिस्टेक मैंने ही लगा दी होंगी. ठीक है, ओके. अब हम अगर एआई इन एवरीडे लाइफ देखें तो एआई इन एवरीडे लाइफ क्या है? हमारे आसपास आपने चैट बॉट्स देखे होंगे. चैट बॉट्स में क्या है? आप चैट करते हो. चैट क्या है? दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, राइट? अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूं तो मैं कुछ डिस्कस करता हूं, मैं कुछ बोलता हूं, मेरी बात सुन के वो समझता है, उसको प्रोसेस करता है और वो मुझे रिस्पॉन्ड करता है, राइट? या इफ यू आर इंटरेक्टिंग लेट्स से विद रेलवे टिकट एजेंट, तो रेलवे टिकट एजेंट से आप क्या बात करते हो? आप जाते हो उसके पास, यू टेल हिम और हर कि आई वांट टू बुक अ टिकट फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली. सो यू टेल दैट पर्सन कि मुझे दिल्ली के लिए टिकट बुक करना है. देन शी आस्क्स कि हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग. देन यू टेल 2 people are traveling. Then again she asks what is the age, what is their detail, can you share the detail. तब आप उसको डिटेल शेयर करते हो. देन शी बुक्स द टिकट एंड गिव्स यू द टिकट, राइट? अब ये चैट कन्वर्सेशन हुई है बिटवीन मी एंड अ रेलवे टिकट एजेंट. इमेजिन अगर एआई के टर्म्स में हम बात करें तो मैं उस पर्सन को जो रेलवे टिकट एजेंट है उसको मैं रिप्लेस कर दूं एक बॉट से, तो क्या होगा? कन्वर्सेशन वही रहेगा, बट पीछे उसके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था वो रिप्लेस हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उस बॉट से मैं पूछूंगा कि मुझे दिल्ली जाना है, टिकट बुक करने हैं. बॉट विल आस्क, क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है. अभी मैंने रिमेंबर आई
talked about learning. वो पहले से trained है, तो it will tell or it will rather ask how many people are traveling, because it's pre-programmed. उसको पहले से पता है कि for this input उसे क्या बात करनी है, right? So this is called conversational AI, because conversation is happening. तो कन्वर्सेशन AI इज नथिंग बट, अगर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स को अप्लाई किया, जैसे पिछले कॉन्टेक्स्ट में क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक को अप्लाई किया था हमने इमेज डिटेक्शन। इमेज डिटेक्शन से मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज, क्लासिफाई किया कि ये डव है, ये पैरेट है, ये बर्ड है। पहली बात तो ये क्लासिफाई किया ये बर्ड है, ये हाथी नहीं, राइट, लायन नहीं है। तो उसके बाद हमने बताया ये पैरेट और ये डव है, तो वो क्लासिफिकेशन था। सिमिलरली ये अलग टाइप का इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहां कन्वर्सेशन हो रही है, और कन्वर्सेशन में बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा, पहले से जो ट्रेन किया गया उसको पता है क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और क्या क्या रिस्पॉन्स करना है। सो दैट इज चैटबॉट। आई एम श्योर आप सबने चैटबॉट यूज किया होगा, और आज की डेट में जीपीटी बहुत चल रहा है, चैट जीपीटी। कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है? एनीबॉडी? ओके ओके, गुड। सिमिलरली आपने देखा होगा कि you ask questions nowadays from Google. When I say ask means on your mobile phone you open the mic and then ask and you get the response, right? वहां पर क्या हो रहा है, वहां ये दूसरा एप्लीकेशन है AI का इन एवरीडे लाइफ। तो वहां पर यही हो रहा है, आप अगर देखोगे कि you asked a question, वो क्वेश्चन जो है आपकी वॉइस को सिस्टम ने सुना। कैसे सुना? उसमें माइक लगा है, माइक से आपका वॉइस जो है वो डेटा में कन्वर्ट हुई और सिस्टम के पास गई। पीछे जो सिस्टम है AI बेस्ड, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पहले से ट्रेन कर रखा है हमने स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जैसे अभी अगर आप देखो, लर्निंग किस चीज की है? लर्निंग है कि स्पीच को कैसे सिंथेसाइज करोगे, लर्निंग इस चीज की है कि आप आंसर्स कैसे बताओगे क्वेश्चंस का, लर्निंग इस चीज की है कि चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। यही तो हम सीखते हैं ना बचपन में। जब हमारी लर्निंग में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं तरह तरह के, और हमें बताया जाता है कि आपको इस ऑब्जेक्ट का ये मतलब है। फिर देन वी आर ट्रेन टू टॉक sentences and make sentences, so that is conversation. Then we are trained to listen and understand, so that is verbal comprehension or reading comprehension. Either we read and comprehend or we listen and comprehend. So same thing yahan pe ho rahi hai, system is listening and comprehending, right? And based on the comprehension it is creating a response and you are seeing the response. So that is another application. Similarly, you might have seen the recommendation. So if you watch Bollywood songs quite frequently of a particular type, let's say if you listen to ghazals, so next time you open up YouTube, it will show you recommended ghazals videos. If you watch a game, then it will show you the game. If you watch cricket, it will show you the cricket videos. If you watch football, it will show you football videos. So what is happening here? क्या हो रहा है वहां पर? Because system is recognizing your pattern, what kind of videos you watch, how many time you watch, how many minutes you watch, etc, etc, and then it's creating and building an intelligence about your preferences. और उस प्रेफरेंस के बेसिस पे then it is identifying, कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपको क्या देखना है। वो रिकमेंडेशन इंजन हो गया। That is another use of AI in our daily life. And most importantly, I am sure कि in your age you all must be using these Discord and Instagrams, etc. So Instagram में भी आपने देखा होगा, when you watch Instagram reels, right? What is happening nowadays? You see this icon, more post you might like. So it's the same thing. Insta reel, when you watch, it builds an intelligence about you, और उसको ये समझ में आता है कि आप किस तरह की चीजें लाइक कर रहे हो या देख रहे हो। Accordingly, it brings up the content or the post which you might like. When it is saying you might like, means based on machines interference, based on machines inference, not interference, inference, machines inference. तो मशीन ने ये डिसाइफर किया, जो इंस्टाग्राम के पीछे का AI है उसने डिसाइफर किया
कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आएगा बेस्ड ऑन योर प्रीवियस हिस्ट्री. सो दीज आर ऑल AI इन एवरीडे लाइफ, राइट? Any questions so far? No. So again, coming back, if I just summarize the AI is ability for a machine to learn, think and behave like an human. मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन के अंदर मैं इस तरह का प्रोग्राम या सिस्टम बना दूं जो लर्न कर पाए, जो उसको मुझे सिखाना है वो लर्न कर पाए, देन उस लर्निंग के बेसिस पे मेरे दिए हुए इनपुट को लेके वो थिंक करके डिसीजन ले पाए एंड मुझे आंसर दे पाए. दैट इज द होल पर्पस ऑफ AI. सो इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफाइंग एन इमेज, उसमें भी यही हुआ, पहले मैंने सिस्टम बना के उसको लर्न करवाया कि इमेजेस किस तरह की होती हैं, किस इमेज का क्या नाम है, वो ट्रेनिंग हो गई उसकी. फिर ट्रेनिंग के बाद जब मैं थिंक वाली स्टेज में आता हूँ, देन उस समय मैं उसको एक नई इमेज दिखाऊंगा एंड इट विल टेल मी व्हाट इट इज. Okay, yeah, so we will go to your questions. Hold on to your question, we'll come to your questions in the at the later part, right? So we'll come to that. But since I have opened up, so I will talk about it. Sir, as we know, AI can be far more dangerous than other inventions. So how can we coexist with machine that inherently lack human values? So this is a great question. I would like to come to this question, Lavish, and I will definitely talk about it, because it's not just with AI, there are many other things which I will talk about, right? So for now, this is the summary of AI. अब AI को सीखने के लिए, if you are interested to learn how to make a system which can be trained on a particular topic, चाहे वो speech recognition हो, image recognition हो, या रिकमेंडेशन बनाना हो या कन्वर्सेशन करना हो, तो हाउ टू डिजाइन दैट सिस्टम, देन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सारा हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में. और कंप्यूटर साइंस की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसको परफॉर्म करने के लिए अब मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल में अगर देखूं, तो कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ब्रांच है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. अब आपने देखा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सिस्टम को डेटा मैं फीड कर पाऊं ट्रेनिंग पर्पस के लिए. तो जैसे बच्चों, अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि आईज को रिप्लेस कर दो आप कैमरा से, तो आपको कैमरा कैसे इंटीग्रेट होगा कंप्यूटर में, या कैमरा से कैसे मैं इमेज निकालूंगा, इसकी प्रोसेसिंग आनी चाहिए. मतलब इसको कैसे मैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिख के अचीव करूंगा, राइट? तो ये कंप्यूटर साइंस के फिर अलग अलग कोर्सेज इससे रिलेटेड आ जाएंगे, जो मिला के आपको पूरा ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने की नॉलेज देंगे. जैसे इमेज प्रोसेस करना, वो एक पार्ट हो गया. दूसरा, उस इमेज को समझ के उसके अलग अलग कंपोनेंट को डिसाइफर करना है कि ये नाक है, ये चोंच है, बर्ड के एग्जांपल में, या फिर चैटबॉट के एग्जांपल में कि सेंटेंस जो बोला गया उसकी लेंथ कितनी है, उसमें क्या क्या वर्ड यूज हुए हैं. तो इन सब को, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आई है इसको एक जगह स्टोर करके रखना. जैसे आप पढ़ते होगे तो आप रजिस्टर बनाते होगे, फाइल बनाते होगे. यू मस्ट बी कीपिंग योर डेटा, मे बी स्कूल डेटा, इन योर रजिस्टर, इन योर फाइल्स, राइट? सिमिलरली जब आप कंप्यूटर का डेटा है तो कंप्यूटर के डेटा से आप कंप्यूटर की फाइल में रखोगे. तो आपको जब एक जगह रखोगे तो उसका एक आपको बेस बनाना पड़ेगा, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटाबेस कहते हैं. तो आपको डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए. फिर आपने देखा होगा कि अब ह्यूमन में तो हम इंटरेक्शन कर लेते हैं, हम बात करते हैं, हमारे सेंसरी क्या पार्ट है, हमारा ईयर्स है, हमारा माउथ है, हमारी आईज है, तो इन सब के थ्रू हम इंटरैक्ट करते हैं. बट कंप्यूटर के लिए क्या है? कंप्यूटर का ईयर्स क्या है? माइक हो गया, क्योंकि उसके थ्रू आवाज जाती है कंप्यूटर के अंदर. उसका मुंह क्या है? उसका स्पीकर सिस्टम हो गया. उसकी आईज क्या है? कैमरा, राइट? तो इन तीनों चीजों को लगा के जैसे हम काम करते हैं, वैसे आपको इन तीनों चीजों को लगाना भी आना चाहिए. तो उसके लिए अलग तरह की पढ़ाई होती है विद इन द कंप्यूटर साइंस. फिर डेटाबेस हो गया, सिस्टम डेटा रिकॉर्ड करने के लिए. ये सारे इंटरफेस हो गए टू मैनेज दिस. एंड इन सब को चलाने के लिए, जैसे मैंने बताया, एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है जो कि हमारा ब्रेन है. तो ब्रेन हो गया सॉफ्टवेयर.
तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं कंप्यूटर साइंस में। एंड व्हेन यू लर्न ऑल दीज टॉपिक्स इन, क्योंकि वो एक साथ नहीं पढ़ सकते आप, तो इसके लिए उसको स्प्लिट करके अलग अलग कोर्स में डिवाइड करके पूरा करिकुलम बनाया जाता है। एंड दैट इज वन type of computer science degree which specializes in artificial intelligence, right? Okay, let's move on. Okay, I will now move on to data science. So data detectives, right? Data detectives क्या है? जैसे अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं और मैं बोलूं कि अगर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देयर आर 10 फ्रेंड्स ऑफ योर्स, आपके 10 फ्रेंड्स हैं, राइट, हु लाइक आइसक्रीम। अब आपके 10 फ्रेंड आइसक्रीम लाइक करते हैं, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर मोस्ट पॉपुलर है आपके फ्रेंड सर्किल में, तो आप क्या करोगे, राइट? बेसिक क्वेश्चन है। मैंने पूछा कि अब आपके सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक लिस्ट बनाओगे मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, आप एक टेबल बनाओगे मेरे ये 50 फ्रेंड हैं, फिर आप उन फ्रेंड से पूछोगे किसको कौन सी उसकी क्या फेवरेट आइसक्रीम है, उसको आप हर फ्रेंड के आगे लिखोगे। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, आप काउंट करोगे कि आइसक्रीम जैसे कुल्फी कितने लोगों को पसंद है, कोन कितने लोगों को पसंद है, हाउ मेनी पीपल लाइक ऑरेंज आइसक्रीम, हाउ मेनी पीपल आर लाइकिंग मैंगो आइसक्रीम। हेलो, somebody is saying something? No, okay. So that's how you will create a table which will tell you like how many people like which ice cream. Then you will kind of further process that. So okay, then you will further process this information and you will sort out means आप उसको देखोगे कि सबसे कम खाने वाली कौन सी आइसक्रीम है, उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, देन आपको पता लग जाएगा कि ये आइसक्रीम जो है कुल्फी इज सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। आउट ऑफ 50 फ्रेंड्स, लेट्स से 40 पीपल लाइक कुल्फी, लेट्स से। अगर ऐसा है तो यू विल कम टू नो द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर इन माय फ्रेंड्स इज कुल्फी। अभी इस पूरी एक्सरसाइज में आपने क्या किया, आपने किया क्या कि सबसे पहले लिस्ट बनाई फ्रेंड्स की, तो यू स्टार्टेड क्रिएटिंग अ डेटा, राइट। फिर सबसे पहले आपने इस पूरी प्रॉब्लम को, जो पहला सेंटेंस दिया गया आपको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया कि कैन यू आइडेंटिफाई कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम फ्लेवर अमंग योर फ्रेंड्स, तो आपने सबसे पहले तो इसको विजुअलाइज किया कि इसको पता करने के लिए आई नीड इंफॉर्मेशन कि हाउ मेनी फ्रेंड्स आई हैव, नंबर वन, देन ईच वन ऑफ देम हैज विच प्रेफरेंस, किसकी क्या प्रेफरेंस है। So I need to create that data and then I need to process that data, and processing means उसको मुझे add करना पड़ेगा flavors के हिसाब से, and then I need to sort that data and then I need to come up the solution. तो इस पूरे छोटे से एग्जाम्पल में हमने ये जो पूरा किया, so what has happened, you have actually visualized what and how information need to be processed. First, what information is required to get the answer. Second, that information consists of certain data. So how will I get that data? Number two, then if I get that data, then what kind of processing is required on that data? And based on that processing, what would be my result? Right? तो क्वेश्चन आपका वही था, बट उसको सॉल्व करने के लिए you have got these many steps, right? That is exactly in nutshell data science. In a very very crude terms. मैं बहुत सिंपल तरीके से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप लोग, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आप लोग अभी you are still learning. I mean, I cannot talk like I'm teaching data science subject, because if I would be teaching a computer science data science course for undergrad or PG or doctorate student, then I will talk different concepts, right? But here for a beginner, this is the data science, right? आपने प्रॉब्लम को ब्रेक किया, मुझे क्या करना है उसके लिए आपने डेटा मॉडल बनाया। डेटा मॉडल क्या बना आपका,
कि मुझे अपने फ्रेंड्स की लिस्ट चाहिए। फिर आपका बना डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब आप कहाँ से डेटा निकालोगे, तो उसके लिए आपने बोला मैं सर्वे करूंगा, सबसे पूछूंगा, तो पूछ के डेटा लाके लिखना, ये डेटा एक्सप्लोरेशन वाली एक्सरसाइज हो गई। फिर आपने बोला मैं डेटा प्रोसेस करूंगा, दैट मीन्स आपने आइसक्रीम के फ्लेवर के हिसाब से डेटा का सम किया और निकाला, नंबर्स निकाले, तो वो डेटा प्रोसेसिंग पार्ट हो गया। फिर उसकी बेसिस पे आपने डिसीजन इंजन चलाया। डिसीजन इंजन क्या है कि आपने उस डेटा को सॉर्ट किया और बताया कि कौन से फ्लेवर सबसे ज्यादा खाया जा रहा है। तो दिस इज ऑल इज डेटा साइंस, राइट? बट ये सिंपल प्रॉब्लम के लिए था। नाउ इमेजिन इफ द प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर मुझे ये बताना है कि एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग हॉस्पिटल चलाते हैं यहाँ इतना बड़ा, राइट? जॉली ग्रांट का हमारा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल भी है। अब अगर मुझे ये पता लगाना हो कि किस टाइप की बीमारियों के पेशेंट किस महीने में ज्यादा आते हैं मेरे हॉस्पिटल में, और उनको कौन सी दवाई दी जाती है, और वो दवा मैं अपने स्टॉक में मेंटेन करूं, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट? अभी हमारे पास डेली हजारों पेशेंट आते हैं और हजारों तरह की बीमारियों के साथ आते हैं। अब उन बीमारियों के बेसिस पे उनका डॉक्टर इलाज करते हैं, और डॉक्टर advise them what needs to be done. Everybody is given a different prescription, right? And when they get a different prescription, it means उनकी बीमारियां भी अलग होती हैं, उनकी मेडिसिन भी अलग होती हैं, and based on the prescribed medication they are given certain medicines, and those medicines should be available in the store, medical store, otherwise patient won't be benefited. तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व, अब कौन सी मेडिसिन मैं किस समय ज्यादा रखूं स्टॉक में। फॉर एग्जांपल सपोज जुलाई के महीने में बारिश जब होती है तो डेंगू फैल जाता है, तो डेंगू के पेशेंट ज्यादा आते हैं, तो ये मेरी कॉमन नॉलेज है। दिस इज मे बी बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ लेता हूँ। लेकिन ये तो एक बीमारी हो गई, अब हमारे पास तो हजारों हजार पेशेंट आ रहे हैं, हजारों हजार तरह की मेडिसिन है, तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व? यहाँ पर आती है डेटा साइंस इनटू द पिक्चर। सो फर्स्ट वी विल मॉडल द सिस्टम कि कौन कौन सी फीचर्स या कौन कौन सी चीजों को लेके हमें सिस्टम बनाना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाना है डेटा साइंस का। तो हमें पता लगेगा कि पेशेंट की डिटेल हमें चाहिए, हमें बीमारी, उनकी डिटेल, बीमारियों की डिटेल चाहिए, वो किस महीने में आए, अपॉइंटमेंट की डिटेल चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा डेटा मॉडल बन गया इन नटशेल। फिर उस डेटा मॉडल के बेसिस पे फिर हमको करना ही होगा कि वो डेटा अब आएगा कहाँ से। तो हमारा हॉस्पिटल का अगर जो सिस्टम चल रहा है, जहाँ पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं से आएगा डेटा, और तो कोई हमारे पास जरिया नहीं है। तो हमें उन हॉस्पिटल सिस्टम से डेटा निकालने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो वो डेटा इंजीनियरिंग का सिस्टम हो गया कि डेटा की पाइपलाइन कैसे बनेगी, मतलब वो डेटा हॉस्पिटल के सिस्टम से उठ के मेरे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कैसे आएगा। तो कोई हाथ से तो देगा नहीं वन बाय वन, या कोई टाइप तो करेगा नहीं, वहां से पढ़ के यहाँ टाइप करे। तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ऑटोमेटेड। जैसे आप ईमेल भेजते हो, सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, राइट? व्हाट्सएप कैसे काम करता है? व्हाट्सएप में आप कुछ मैसेज टाइप करते हो, तो आपके मोबाइल में टाइप किया हुआ मैसेज किसको जाना है वो आप बता देते हो, उस पर्सन का नंबर क्या है वो आप बता देते हो। तो वो डेटा जाता है सबसे पहले आपका व्हाट्सएप के थ्रू आपके मोबाइल में, मोबाइल के सिस्टम से वो डेटा ट्रांसमिट होता है आपके व्हाट्सएप के पास थ्रू टेलीकम्युनिकेशन चैनल। फिर व्हाट्सएप उसको प्रोसेस करके बताता है कि ये आपके फ्रेंड ए को ये मैसेज जाना है, तो उस फ्रेंड ए का ये फोन नंबर है, तो उसको वो मैसेज भेजता है। फिर उस फ्रेंड ए के फोन पे आप वो जब डेटा रिसीव होता है तो उसका व्हाट्सएप जो है वो मैसेज दिखा देता है। सिमिलरली तो ये पूरा सिस्टम बनाना। उसी तरह हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल ले रहा था, अगर हमें डेटा हॉस्पिटल सिस्टम से लाना है तो वी नीड टू क्रिएट सम सिस्टम which will bring data from hospital system to our system। तो डेटा मॉडलिंग के बाद हमने ये डेटा इंजीनियरिंग वाला काम किया कि डेटा आएगा कैसे। सेकेंड स्टेप फिर हमने किया कि उस पे हमने अपने फॉर्मूले लगाए या फिर हमने प्रोसेसिंग करी डेटा। जैसे अभी मैंने बताया था कि किस महीने में किस तरह की बीमारी, तो वो सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी मुझे, उसके लिए प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। और वो कंप्यूटर प्रोग्राम मेरा क्या करेगा कि वो बताएगा कि हाँ इस महीने में डेंगू, जुलाई के महीने में डेंगू के
फीवर, डेंगू फीवर के पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं, और डेंगू फीवर के 5000 पेशेंट इन अ डे आते हैं, और 5000 पेशेंट के हिसाब से 3000 पेशेंट के लिए हमें दवा 10,000 टैबलेट रखनी जरूरी है पर डे। तो उतना स्टॉक मुझे मेंटेन करना है, वो सिस्टम इंफॉर्मेशन दे देगा, तो आपका डेटा साइंस का पर्पस सॉल्व हो गया। तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर है। तो अभी डेटा साइंस becomes much more complex when we look at the complex problem. अभी तो जो मैंने दो एग्जांपल लिया आइसक्रीम का और हॉस्पिटल का, so these are simple examples. So even हॉस्पिटल वाला is very complex because डेटा लाना तरह तरह का और फिर उसको प्रोसेस करना is a challenge. So ये सब डेटा साइंस का पार्ट है. Now if we look at ingredients of data science, तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको इन नटशेल, तो उसमें अगर आप देखो कि आपको डेटा इंजीनियरिंग पार्ट की डेटा आएगा कहाँ से, डेटा मूव कैसे होगा, दैट इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड आया डोमेन एक्सपर्टीज. डोमेन मतलब अगर मुझे हॉस्पिटल के लिए बनाना है सिस्टम, तो मुझे पता होना चाहिए हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट आते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, डॉक्टर होता है. जैसे मैंने फ्रेंड्स के लिए बताया था, फ्रेंड्स का आइसक्रीम, तो वो फ्रेंड्स की आइसक्रीम की नॉलेज जो है वो डोमेन एक्सपर्टीज, उसको ही हम डोमेन एक्सपर्टीज कहते हैं. फिर आया स्टैटिस्टिक्स. तो हमें स्टैटिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने बताया अभी कैलकुलेशन, अभी तो हमारा बेसिक कैलकुलेशन था कि आपने टोटल कर लिया कि किस आइसक्रीम को कितने बच्चे खाते हैं, तो टोटल कर लिया आपने. कौन सी बीमारी किस महीने में ज्यादा होती है, तो टोटल कर लिया आपने. बट इमेजिन अगर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो हमें स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई करनी पड़ती है. फिर इस स्टैटिस्टिक्स, डोमेन नॉलेज और डेटा इंजीनियरिंग के बाद जो डेटा आता है उसको हम एडवांस कंप्यूटिंग में हम उसको क्रिएट करते हैं इन रीडेबल एंड यूजेबल फॉर्मेट. जैसे पहले एग्जांपल में आइसक्रीम वाले एग्जांपल से अगर आप रिलेट करो, तो हमारा रीडेबल फॉर्मेट क्या हो गया, मुझे एक आइसक्रीम का नाम, फ्लेवर का नाम पता लग जाए और जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है, तो वो कंप्यूटिंग क्या करेगा, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके मुझे सम करके बताएगा. सिमिलरली हॉस्पिटल के एग्जांपल में कंप्यूटिंग क्या करेगा कि वो सारा डेटा कलेक्ट करके, प्रोसेस करके, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स लगाई है, जो फॉर्मूले लगाए हैं, उसके हिसाब से मुझे आंसर निकाल के देगा. और उस आंसर को हम विजुअलाइजेशन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं. तो विजुअलाइजेशन इज नथिंग बट प्रेजेंटेशन लेयर. So in nutshell, these are the ingredients of data science. So अब डेटा साइंस को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए, तो अगेन रीआइटरेटिंग, आपके पास डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए. दूसरा मैथ और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. तीसरा कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड विजुअलाइजेशन. मतलब विजुअलाइजेशन एक आर्ट है जो सीखनी पड़ती है. अगेन इट्स टॉट कॉलेजेस में, हमारे यहाँ सिखाई जाती है. हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कंप्यूटर साइंस के कोर्स हैं, डेटा साइंस के, उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं. तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो अगेन मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिला के डेटा साइंस का एक कोर्स बनेगा, और साथ में मैथ्स स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज चाहिए, और डोमेन नॉलेज और विजुअलाइजेशन जो है वो जब आप प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल करते हो वहां से आता है. So these are the 4 pillars of data science and key knowledge required. So this is about data science. Now let's look at third item. I mean, please keep writing your questions in Q&A section. I will be covering those sections, or I will rather try to answer them to the best of my abilities. Next is cyber security. तो अगर आप देखोगे तो ओके, बिफोर गोइंग टू द साइबर सिक्योरिटी, एक चीज और मैं डेटा साइंस में कहना चाहूंगा कि डेटा साइंस कैसे फ्यूचर, जैसे हमने एआई देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो हमें तरह तरह से हेल्प कर रहा है इन डिफरेंट वेज. उसी तरह डेटा साइंस हमें कैसे हेल्प करता है, तो वो बेसिकली क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, तो उससे हम पैटर्न बनाते हैं, और उस पैटर्न की बेसिस पे हम डिसीजन ले पाते हैं. ये एक बहुत बड़ा रोल है डेटा साइंस का. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक पर्सपेक्टिव में बताऊं, तो आज की डेट में अगर पूछा जाए कि सपोज गवर्नमेंट को कोई स्कीम लॉन्च करनी है, एंड दे वांट टू नो कि इस स्कीम को किस एरिया में, किस रीजन में, किस तरह से लॉन्च किया जाए, तो अब इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, तो उसके लिए उनको वो सारा डेटा निकालना पड़ेगा सिटीजन्स के बारे में,
प्रोफाइल के बारे में, उस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, और बहुत सारा तरह तरह का डेटा निकालना पड़ेगा। फिर उस सारे डेटा को लेके एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि उस मॉडल के बेसिस पे फिर वो डेटा सारा ला के फीड करना पड़ेगा सिस्टम में, और सिस्टम कैलकुलेट करके फिर आपको बताएगा कि ये स्कीम इस तरह से इस रीजन में चलाई जा सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो इसमें अगेन मैथ्स, कोडिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टू सम एक्सटेंट डिटेक्टिव स्किल्स। इसीलिए मैंने बोला था डिटेक्टिव स्किल्स, क्योंकि सॉल्विंग अ पजल, यू आर सॉल्विंग अ पजल यूजिंग डेटा साइंस, राइट? सो वो एक स्किल है जहां पर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओ इन टर्म्स ऑफ पैटर्न। वो एक नॉलेज है जिसको हम डोमेन नॉलेज या फिर कम्युनिकेशन एंड विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट डेटा साइंस। नाउ गोइंग बैक टू द साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या है? साइबर सिक्योरिटी में है, सपोज it's like a, you can say, superhero, right? And the mission is to protect us in the digital world, right? Somebody has written something in the chat, let me see. Yeah, okay. Yeah, so the mission is to cyber security जो branch है computer science की, उसका mission है to protect us in the digital world, right? Now इमेजिन, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। इमेजिन इफ यू हैव अ लेट्स से सीक्रेट डायरी, राइट? तो आप उस डायरी को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? आप नहीं चाहते अगर कि कोई आपकी उस सीक्रेट डायरी को, बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, कि कोई रीड करे, देन व्हाट डू? You might want to hold it and lock it somewhere and keep the keys with you, right? So this is happening in the physical world. Similarly, suppose if you have your secret diary, digital secret diary, what would you do? You will keep it in a digital place, up in a digital wallet, and lock it and keep the key with you. तो फिजिकल वर्ल्ड में लॉक और की है आपके पास फिजिकल, डिजिटल वर्ल्ड में की क्या है? आपका पासवर्ड, और लॉक क्या है? पासवर्ड वाला सिस्टम, राइट? तो आप अपनी ईमेल खोलते हो तो ईमेल कोई दूसरा एक्सेस ना करे, इसके लिए आप क्या करते हो? उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो लॉक है वो ईमेल प्रोवाइडर आपको देता है, एंड की है आपका पासवर्ड, तो उसको लगा के आप ओपन कर लेते हो। सो दिस इज काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमारे इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर पे है उसको प्रोटेक्ट करना, हमारे कंप्यूटर को भी प्रोटेक्ट करना कि वो करप्ट ना हो जाए, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में हमारे, या नॉट जस्ट कंप्यूटर, व्हेन आई से कंप्यूटर मींस इट कुड बी कंप्यूटर, इट कुड बी आवर लैपटॉप्स, इट कुड बी आवर टैब, इट कुड बी आवर मोबाइल फोन। जो भी डिजिटल हमारे पास गैजेट्स हैं, जहां पर भी डिजिटली मेरा डेटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेज हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट यू कैन से लेवल्स एंड लेयर्स। तो ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी में कवर होती है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम इन डिटेल इन अ मिनट, राइट? अब एवरीडे लाइफ में साइबर सिक्योरिटी कैसे इम्पैक्ट करती है? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सब लोग मोबाइल फोन यूज करते होंगे, राइट? तो nowadays everybody is locking their phone using either password or maybe through you can say biometric, your thumb impression and all, है ना? आप लोग फिंगर से भी लॉक करते हो। तो वहां क्या हो रहा है? वहां पर अगर कोई आपका पासवर्ड क्रैक कर ले, इमेजिन, तो क्या होगा? वो आपके कंप्यूटर, अगर उनको आपका मोबाइल मिल जाता है तो उसको ओपन करके फिर वो आपका डेटा चुरा सकते हैं, या फिर आपकी कोई इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकते हैं, या आपका कोई ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आपकी पूरा फॉर्मेट भी कर सकते हैं, राइट? तो ये अगर कोई कर रहा है तो ये फिजिकल पर्सन कर रहा है। बट इमेजिन ए सिनेरियो कि फिजिकली करने की बजाय अब मेरा कंप्यूटर अगर एक कनेक्टेड है एक नेटवर्क में, इंटरनेट, तो मेरा कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसको मेरे कंप्यूटर
तक पहुंचना है वो मेरे कंप्यूटर तक पहुंच सकता है। फिर मेरे कंप्यूटर में पहुंचने के बाद वो मेरे कंप्यूटर के अंदर जाके वो मेरी फाइल डिलीट कर सकता है। जैसे अभी मैंने मोबाइल का एग्जांपल लिया कि अगर मुझे किसी का मोबाइल मिल जाए और उसमें उसका पासवर्ड नहीं है, तो आई कैन रीड द फाइल, आई कैन डिलीट द फाइल, आई कैन अपडेट द प्रोग्राम, डिलीट द प्रोग्राम, आई कैन डू एवरीथिंग। सिमिलरली सपोज कोई अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर घुस आया है, अब प्रोग्राम, अब अंदर कौन घुसेगा कंप्यूटर के? आदमी तो घुस नहीं सकता। सो हु कैन एंटर द कंप्यूटर? So only a software has the ability to enter the computing devices, be it laptop, tab, or any sorts of computing device. So if software penetrates to your device, then they can be designed to tamper either the settings of your device, or they can infect. When I say infect, means they can delete the files, or they can steal your identity and files, or they can destroy or even format your device, right? So to protect them, we need to create a layer which we call in a firewall, right? A firewall and antivirus. So firewall and antivirus is nothing but a kind of gate or a kind of boundary wall which we create, which doesn't allow any external software to enter into my computer without my permission, right? So ये जो branch है computer science की, that is called cyber security, right? Now let's look at what kind of components cyber security has. So digital key. So digital key, as I was mentioning, जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में आप पासवर्ड लगा देते हो, या फिर फिंगरप्रिंट से आप अपना मोबाइल लॉक कर लेते हो। फिर ईमेल अगर आपके पास आती है, आप सबने देखा होगा कि गूगल बोलता है कि आई एम स्कैनिंग योर मेल फॉर वायरस। सो इट डिटेक्ट्स वेदर योर मेल हैज गॉट एनी वायरस अटैच्ड टू इट और नॉट। क्योंकि अगर उस मेल को आप ओपन करोगे तो वो वायरस जो मेल में है वो आपने एक्सेस कर लिया, बिकॉज आपने अलाउ किया। हेलो, नहीं वो तो भेज दिया हमने। हेलो, कैन वी गो ऑन म्यूट प्लीज इफ यू आर नॉट स्पीकिंग? बेसिकली क्या है, जो अपडेट है वो अगर कंटेंट में है और नाम में है तब उसमें चेंज करना पड़ेगा। जो हमने उन्हें भेजा है, अगर उसमें किसी सब्जेक्ट के नाम में चेंज है, या आपने थर्ड सेमेस्टर से उठा के उसको सिक्स्थ में डाल दिया। ओके, बेटर, करेक्ट, ओके। सो तो ईमेल का जो वायरस प्रोटेक्शन सिस्टम है, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी के जो कंपोनेंट्स है। देन वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या है कि आपकी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन, जैसे पासवर्ड गया आप तो somebody has to verify. देन एक्सेस कंट्रोल मीन्स आप किसी रीजन से अपने कंप्यूटर सिस्टम पे किसी को या किसी भी सिस्टम पे एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेस देंगे। जैसे 4 यूजर हैं आपके किसी सिस्टम के, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से टिकट बुकिंग का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, राइट? तो टिकट बुकिंग के एग्जांपल में जो टिकट विंडो पे जो क्लर्क है उसको आपने अथॉरिटी दे दी है कि भाई तुम टिकट बना सकते हो, टिकट क्रिएट कर सकते हो, बट जो टिकट आप बना दोगे उस टिकट से के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर टिकट मेरे लिए बना है, मनीष के लिए बना है, तो मनीष का टिकट देहरादून टू दिल्ली का अगर बन गया, पीएनआर जनरेट हो गया, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू अपडेट द नेम ऑफ मनीष श्रीवास्तव अगेंस्ट दैट टिकट नंबर, but and you will not be able to delete it, but there would be another person जिसको वो अथॉरिटी हो सकती है फॉर डिफरेंट रीजन। सपोज अगर ट्रेन कैंसिल होती है तो उस पर्सन को कैंसिल करने की अथॉरिटी है, बट जो टिकट विंडो पे बैठा पर्सन है उसको अथॉरिटी नहीं है। एंड हु वुड बी दैट पर्सन? वो पर्सन होगा रेलवे मिनिस्ट्री का कोई पर्सन जो कंट्रोल कर रहा है ट्रेन के ऑपरेशन को। तो सपोज वो ट्रेन कैंसिल हो गई तो वो सारे टिकट भी कैंसिल करेगा, उसमें मनीष श्रीवास्तव का भी टिकट कैंसिल हो सकता है। तो ये सुपर एक्सेस उस पर्टिकुलर पर्सन को, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल, राइट? सिमिलरली इफ यू लुक एट पेमेंट, तो पेमेंट को सिक्योर करने के सिस्टम है, अदरवाइज कोई भी पेमेंट बीच से किसी को भी भेज सकता है।
डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, जहां अभी मैंने बताया कि कोई डेटा डिलीट ना करे, चुरा ना ले। फिर फायरवॉल, अभी एज आई एक्सप्लेन। सिमिलरली नेटवर्क की सिक्योरिटी अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बताऊं तो आप देखते होंगे कि हम इंडिविजुअल जब यूज करते हैं कंप्यूटर, तो हम अपने घर में अगर या स्कूल में या कॉलेज में हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, और इंटरनेट के से कनेक्ट करने के लिए हमें हॉटस्पॉट या वाईफाई चलाना पड़ता है, राइट। और हॉटस्पॉट एंड वाईफाई क्या है? नेटवर्क है ना। तो वो नेटवर्क के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उस लेवल पे भी हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि कोई मेरे राउटर को ना हैक कर ले, क्योंकि मैं तो गूगल एक्सेस करने जा रहा हूँ, वो लेके कहीं और चला गया। तो नेटवर्क की भी सिक्योरिटी होनी है। ऑनलाइन प्राइवेसी, ये भी एक एरिया है। एंटीवायरस, fingerprint, computer security and data encryption. So again, I'm not going into too much detail of these components, but I hope कि you've got the basic idea कि cyber security में क्या क्या होता है। मतलब cyber security is not a buzzword. It has many components and many layers at device level, at data level, at security level, access control level, at different level. अब हम कैसे अचीव करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। सो इसको अचीव करने के लिए अगेन, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, सो देयर इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हिच टीचेस अस हाउ टू डिजाइन एंड डेवलप दीज सिस्टम्स एंड इम्प्लीमेंट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सोचो तो जीमेल भी किसी ने बनाया है ना, सॉफ्टवेयर, राइट। उसके पीछे जो वायरस स्पैम प्रोटेक्शन लगा हुआ है, somebody has written that program, right? Firewall has been designed and created and developed by someone, right? So that knowledge of creating those programs and systems and process to secure our digital presence or digital footprints is taught in the branch of cybersecurity. That is what is cybersecurity, right? And if we look at total, so this is interesting slide. I would take a special emphasis on this because आप लोग अगर देखो, so this is very upcoming field and 9.7 crore new jobs will be created in AI, data science and cyber security. ये फिगर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वर्ल्ड वाइड एक एजेंसी है जो कि बहुत सारी चीजों की मॉनिटरिंग करती है, फोरकास्टिंग करती है, और इट्स ए ग्लोबल फोरम। तो उनके हिसाब से 9 पॉइंट, और ये 2020, आज हम 2023 में है, तो डिमांड अभी और बढ़ गई है। तो almost 10 crore new jobs will be created in AI, data science and cyber security. So you can imagine what is the scope available in front of us. और अगर आप देखोगे आने वाले समय में जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स मैंने लिए, चाहे वो एआई की हो, डेटा साइंस की हो, साइबर सिक्योरिटी की हो, ये बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो सिस्टम की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आज से मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले चैट जीपीटी जब नहीं था, तो हम लोग उतना फ्रीली कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे। हम गूगल से पूछते थे, गूगल जो भी हमें आंसर देना देता था, फिर हम उसको जाके सर्च करते थे, बट हम समराइज नहीं कर पाते थे उसको। बट आज की डेट में वो अवेलेबल है थैंक्स टू एआई, राइट। सो अब इसका नेक्स्ट वर्जन आता जा रहा है अलग अलग एरिया में। तो इस तरह से कमिंग बैक, अब ये जो सिस्टम बन गए हैं या बन रहे हैं, इसको बनाने के लिए हमें लोग चाहिए। वो लोग कहाँ से आएंगे? सो दीज विल बी द न्यू जॉब्स, नंबर 1। नंबर 2, जो सिस्टम बन गए और एआई, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी में जो पिछले 5 सालों में बने हैं, उसको मेंटेन करने के लिए भी तो लोग चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? क्योंकि मान लो जिसने बनाया, हो सकता है वो रिटायर हो जाए 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद somebody has to maintain it। तो इस तरह से ये सारे न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे, एंड दिस नंबर इज ह्यूज एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर young students who wish to enter into these fields, AI, data science and cyber security, as a specialist branch of computer science. And I'm glad that SRHU is offering these courses in terms of specialization in AI, data science and cyber security, not in computer science. So with this number, I would take a pause here, and I would say thanks to you all for patiently listening to me, and I will stop my presentation over here, and happy to answer questions from the audience. I know we are overrunning, but we can take 5-10 minutes more. I am happy
I mean, I can talk for hours on these topics, but in the constraint which you guys have put in, so I will take a pause here. Sorry about the overrunning. Thank you, sir. Moving towards next session, it's a questionnaire, and there is a question from Lavish Sharma. AI can be far more dangerous than other inventions. So how can we coexist with machines that inherently lack human values? Correct. See, this is a great question. I would say, if you look at the artificial intelligence, so intelligence, the way, if you remember, I was telling that intelligence gives us ability to think and apply our thinking into actions, right? So that is the basic intelligence, and to get that intelligence we need to learn. So that completes the loop or the circle. Now in terms of AI, so AI, yes, it can think. AI, yes, it can create, you can say, answers for us, but AI cannot act. Humans can act, right? So if you look at in the context, suppose, so AI will not per se harm other human. It would be always a human harming other human, because AI say up, I mean AI in itself is harmless, but if somebody is misusing it, so I think question is more around how we are educating ourselves to use these technologies for meaningful full purpose. So मैं अगर context में बात करूं, दूसरे context में similar example दूं, it's like nuclear energy, right? So nuclear energy gives you the power and the abilities to generate electricity, and nuclear energy also gives you the power to generate and create bombs. So how you are using it, and it's at the end of the day human being who are using these technologies, चाहे वो nuclear energy हो चाहे AI हो. तो अगर human being is not trained, so ethics has to be brought in. The human greed has to be satisfied. It has to go. Then only meaningful or positive uses of AI will be there, right? So I mean, saying AI can be far more dangerous is to some extent not a true reflection, rather than how we need to create ethical parameters within the human being to use the AI is a more larger and complex problem, I would say. I hope that answers. I mean, I'm happy to continue that discussion, but that is the perspective which I can share. So there is another question from Anurag Das. Can you discuss the potential impact of AI and data science on the job market? And which industries or roles do you think are most vulnerable to automation? Okay, so as I was explaining, if you remember in my last slide, I mentioned that 9.7 crore new jobs will be created by 2025 as per World Economic Forum, right? So now your question is more around potential impact in the job market. So these are new jobs created. There is a downside to it when some people say that some jobs won't exist, right? And the industry will be impacted because of this automation. So in the same you can say World Economic Forum report, they have mentioned that while 99.7 crore new jobs will be created, it may happen that 5 to 6 crore jobs will go off because of this automation. So what is happening here? It is creating the opportunity for us to learn and apply new skills and be ready for the future. So if we don't learn new things, then yes, your jobs will be redundant. But if you learn new things, then there is opportunity. So if you look at the data in the perspective, opportunity is much larger than the redundancy. So अगर 9.7 crore job create हो रहे हैं, उसके बदले 4 crore job impact हो रहे हैं. So in net we are creating 5 crore more jobs, right? तो इसको इस तरह से देखना चाहिए rather than job loss. अगर हम job impact की बात करें,
तो personally I don't feel कि job loss बहुत ज़्यादा होंगे, but people will be able to do things faster and better. जैसे for example, I don't know how many people use Canva, right? How many people use several other tools now available in the market for different purpose, right? Now everybody is building some sort of AI in their tools, like Canva. Canva can help you in designing creative content, right? So you may say that creative content अगर मैं बनाने लगा Canva से, तो मेरे canvas painter का क्या होगा, जो design बनाता है, right? So he will be redundant. So my question is that painter has to learn this new skill, and he will be a better designer, better graphics designer if he is using AI of Canva. See, at the end of the day, somebody is required to operate that Canva AI. And who would be that person? Who is a graphic designer? So if I'm a graphic designer of yesterday, I used to sketch, let's say using pen and pencil, and then create an image in the computer and then update it. So I'm taking 10 days to come up with, let's say, one icon set or one theme or one kind of design, the design which you can see on the wall in terms of graphics. Then it is helping me to do the same thing in just one day. So if I learn that skill, I will be creating in 10 days 10 times more, you can say, work. I can do 10 times more work, and it will improve my productivity, and it will bring in more profitability also. पहले मैं 10 दिन में एक डिजाइन बनाता था और मैं X रुपीस कमाता था, अब मैं 10 दिन में 5 डिजाइन बनाता हूँ और मैं 5X कमाता हूँ. So it is helping that way, right? So I hope that is okay. Because of lack of time, we will quickly take one more question. Sir, what are your thoughts on using AI in sensitive areas like in military? This is a very interesting one. So AI has been used in military for quite some time now. You might not be knowing it, but it is being used across the world, right? In different shape and form. So in today's world, whatever AI is available or known to us in form of chat GPT or recommendation engine, etc., this is a kind of AI available to the masses in terms of retail, not I would say retail, means consumer level applications. But AI is being used in military. So it's a dangerous proposition in nutshell. I understand what you're saying. AI in military is a dangerous proposition. When I say it's dangerous proposition, how it can impact us. So for example, using AI, now we have an ability to, you can say, create and different kinds of you can say tools which can hamper the security. I mean, I don't want to get into too much technical detail, but my personal view is that it's a threat. But more than military, it's a threat for the for the, it's more of a, I mean, AI is not a threat rather, but cyber security related components are threat, right? And when I relate to cyber security and AI means, पहले क्या होता था cyber security के point of view से, जैसे suppose I'm not sure how many people are aware कि हमारा जो power grid है, national power grid of India, तो नेशनल पावर ग्रिड में क्या है कि जितना भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. तो नेशनल पावर ग्रिड इज कंट्रोल्ड बाय सम सॉफ्टवेयर्स, राइट? तो उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए आई थिंक few months back there was a cyber attack originated from China, and 15 seconds or maybe few seconds or few milliseconds के लिए they took control of power grid of Maharashtra. So imagine इतने सारे सिस्टम को bypass करके they managed to reach out to the control room of power grid in some part of India. And अगर वो उस पावर ग्रिड को शट डाउन कर देते तो क्या डिजास्टर हो सकती थी?
right? So these kind of things are happening now. So these are cyber security threats which are happening. So अब जो military में direct use नहीं होता, so these are the ways through which things are happening. Now military में जो use है वो इस तरह से होता है कि जैसे अब ये तो हमारा एक different kind of attack हो गया. Military में जो use होता है वो होता है drones की form में. जैसे for example आज की डेट में there are sophisticated you can say pilotless aircraft available, fighter planes available which are called drones, जो कि AI की मदद से रन होते हैं. क्योंकि अभी मैंने बताया था कि eyes, ears and mouth are replaced by camera, mic and speaker. तो वो replace करके there are robots and there are algorithms which AI based algorithm which are flying the you can say these drones. और वो ड्रोन चूंकि फाइटरलेस है, मैनलेस है, उसमें कोई ऑपरेट नहीं करता, मशीन ड्रिवन है, तो उनका एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है जो कि बैठ के यू कैन ऑपरेट 10 ड्रोन्स एंड यू कैन क्रिएट एन एयर स्ट्राइक टू पाकिस्तान. दैट इज पॉसिबल, दैट इज हैपनिंग. तो ये एआई का एक पिटफॉल है कि उसको हम डेंजरस रूप में यूज कर रहे हैं. सिमिलरली एआई को यूज करके मिलिट्री इज आल्सो प्रोड्यूसिंग certain combat vehicle which will run on it their own. Army is also creating robots in place of soldiers, right? So those are some dangerous experiments which are happening, and I wish that there are ethics and guidelines created around meaningful use of AI. So all over the world people are struggling to create meaningful ethics and guidelines, but yes, this is the reality that's happening. So we are moving towards the winding up the session. Thank you so much, sir. You had tried to cover all the basic aspects for the students of AI/ML, data science and cybersecurity, that how we train the models, how we are giving the input to them, how we put the label data and take out the desired output from them. And you had also told the importance of data today. Data is equivalent to money, and because it is growing with the exponential growth, so how this can be converted into a benefit or the commercial businesses. And the role of cybersecurity, you have also considered or take the examples of our day-to-day life. So how these technologies are impacting in some way to our digital society. So a beautiful session has been conducted, and it's all thank you to you, sir, for giving your time to the students. And the questions, there are lots of questions, but because of the shortage of time, we have to wind it up here. So Sure. And I would like to add just one thing, Dr. Pooja, that I'm happy to answer questions in person. Or you can write an email to me. I mean, probably Dr. Pooja, you can circulate my email, and I'm happy to talk and take further session, in-depth session, as many as session required in future. And I hope this session is definitely informative and engaging as we did. So I would like to thank all the organizers of IT department of SRHU and the admission cell for taking care of the nitty-gritty behind the curtain and for the technical session. Thank you so much. Lastly, I would like to thank you all for attending and participating in this webinar. We hope that the information and insights provided by sir will help you, and we wish you all the best for the career. Thank you so much. Be grateful, be graceful, signing you off. Thank you everyone.